Hi, you guys, I'm Jasmine, and welcome back to my YouTube channel. I know I've been missing for way too long because I have been very busy with work. तो आज मैं अपने स्टूडियो में हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट डू अ गेट रेडी विद मी फॉर माय यूट्यूब फैमिली व्हाइल आई एम एट वर्क विद स्विस ब्यूटी. आज का लुक इज वेरी बेसिक, मिनिमल, like a no makeup look for your office, so that it makes you look more professional with very minimal effort. I hope you guys enjoy this video and let's jazz it up. सो सिंस आई एम डूइंग अ गेट रेडी विद मी फॉर वर्क, तो जब भी मैं वर्क करती हूँ मैं बहुत ही एक मिनिमल सा लुक करती हूँ. मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती. आई ट्राई टू कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल ताकि आप प्रेजेंटेबल लगो एंड एट द सेम टाइम ऐसे लगे कि आपने मेकअप किया है. सो आई एम गोना गो अहेड विद स्विस ब्यूटीज कंसीलर इन द शेड 4 मीडियम बेज एंड आई एम गोना अप्लाई टू द इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज जहाँ पर भी थोड़ी सी डार्कनेस है एंड जहां पर भी आई हैव एनी स्पॉट्स दैट आई नीड टू कवर वहां मैं ये शेड यूज करूंगी क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से बहुत मैच करता है. नाउ यू कैन टेक विच एवर ब्रश यू वांट और स्पंज और अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लो. नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू ब्लेंड योर कंसीलर अंडर योर आई सो दैट इट लुक्स के आपके बेस में फुल कवरेज है. आई लव दिस शेड, ये इतनी ब्यूटिफुली ब्लेंड होता है. This literally blends like butter, you guys, over any spots that need to be concealed. And see, it already looks so nice. अभी I'm going to go with my second shade of concealer. This is in the shade 3 light. अब हमेशा याद रखना है second shade of concealer आपके first shade से थोड़ा light होता है. इसको आप यूज कर सकते हो to brighten the areas that you want. You can also contour your jawline with this और ये एक definition देता है. So you can totally go and skip foundation, especially जब आप एक work look कर रहे हो. Now again I'm going to take my sponge and I'm gonna blend it under my eyes. Whole point of doing makeup while going to work is to show that how professional you are when it comes to your work. कि आपने time लिया है, आपने अपने आप को groom किया, and you take yourself and your work very seriously. So I think minimal makeup at work is a must. Now I'm going to take in my foundation brush and I'll blend it all over my face really nicely, so I don't need a foundation. At the same time my face looks one tone and it looks really nice. And if you want, आप अपने concealer को you can take it down to your neck. You guys, this concealer is so good. The texture is so smooth. तो ये इतनी जल्दी और इतनी easily blend हो रहा है कि आपको definitely foundation की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी. My next step is going to be setting my face with this powder from Swiss Beauty. It's their oil control compact powder. This comes with a sponge like this जो बहुत helpful होता है. Since ये bendable है तो you can go and set the areas that are very delicate, for example the area under your eye. And oh my god, this powder is so smooth, it's so thin, the texture is so nice कि बहुत easily blend हो जाता है. It's very important to set your face with powder, but जब आप काम कर रहे हो obviously you can't do a lot of baking और आपको करनी भी नहीं चाहिए, but it is important to set your face क्योंकि कभी आप travel कर रहे हो through rickshaws, buses, maybe cars, या sometimes you have work that is outside. Make sure that you set your face when you're working. This one is absolutely amazing. Now I have set all of my face with the powder. अब इसकी एक और चीज अच्छी कि if you lift it up, there's an other powder. Now this one, इसमें थोड़ा सा glitter है, थोड़ा सा shimmer है. So if you want that natural, what do you call it, like the highlighter effect, so just I'm gonna contour my jaw with it. So इससे you can contour your jaw at the same time. It's just gonna look very glittery and nice. Now it's time for brows. जब भी मैं अपने brows करती हूँ ना, especially for work, मैं उसको बहुत ही light रखती हूँ. What I like to do is I like to go with the natural shape of my brows and just fill them in. Do you see the kind of difference it makes? क्योंकि जब आप काम कर रहे हो आपको ज़्यादा नहीं करना. You don't want to draw them, you don't want to overline them, you don't want to use a gel, you just want to very naturally fill them. Now I'm gonna do the same thing with the second side. In case I forgot, this is the eyebrow and gel liner from Swiss Beauty and it is absolutely amazing. This is very pigmented, तो इसको ध्यान से लगाना and see. Just go with the natural shape of your brows और जब आप front में आओगे, just fill it with upward strokes. That's it.
That's it. I mean, do you see सिर्फ concealer लगाया है, powder and brows, and it already looks like, you know, आपने effort डाला है. So when you're going for work, effort is important, but don't overdo it. That's what I'm trying to tell you guys. Now that I'm done with my eyebrows, the next step is obviously eyes. क्योंकि एक बार जब आपने अपने brows को shape कर लिया है, तो आपको eye makeup करने में easy होगा, since you know how your brow is looking. So I'm gonna go ahead with this stunning palette from Swiss Beauty. It's their ultimate shadow palette. They have neutral browns, peaches, pink, you know, dark brown for smoky eyes, and this is like a like you can create so many looks with this palette. So today I'm going to use this one. Now for anyone who is a beginner, या अगर आपको लगता है कि आपको ऑफिस में बहुत ही minimal no makeup look चाहिए, so always choose the lightest shade in the palette with a fluffy brush. Once you choose the lightest shade in the palette, apply it all over your eyelid. ठीक है, दिस इज द ट्रिक. अगर आपको आई शेडोज लगाने नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम, just use the lightest shade in the palette and apply it all over your eyelid to just give it a very natural color. अब सेम चीज करनी है, लाइटेस्ट शेड लेना है with a fluffy brush and apply it all over your eyes इन अ सर्कुलर मोशन. हमेशा याद रखना, जब अपना आई शेडो लगा रहे होते हो विद अ फ्लफी ब्रश, उसको एक सर्कुलर मोशन में आपने अप्लाई करना है. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द सेम आई शेडो एंड अप्लाई इट ऑन माय लोअर लैश लाइन एज वेल. यू गाइस, लोअर लैश लाइन कभी भी मत मिस करना. इट मेक्स योर आईज लुक बिग, इट ओपन्स योर आईज अप व्हेन यू डू योर मेकअप. सो ऑलवेज 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 apply your eyeshadow on the lower lash line as well. सी ऑनेस्टली आई एम सुपर हैप्पी विद माई लुक. यूजुअली मेरा यही लुक होता है फॉर वर्क, फॉर मीटिंग्स, बहुत ही मिनिमल. बट मैंने काफी देखा है लोग आईलाइनर लगाना प्रेफर करते हैं. सो जस्ट इन केस इफ एनी वन वॉन्ट्स टू डू अ वेरी मिनिमल eyeliner, so I'm going to show you how to create it. It's a trick using an eyeshadow. So take the same palette, go with a darker shade of brown with a small brush, like इसको कहते हैं smudge brush, and just smudge it near your waterline, just like this. And make a wing. इसको थोड़ा सा ना ऐसे बाहर खींच दो and just smudge it properly. And now when you and just elongate it like this. अब जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो ऐसे लगेगा कि आपने लाइनर लगाया है, बट इट्स नॉट वेरी विजिबल, एंड एट द सेम टाइम आपको एक डिफरेंस लगेगा. सो इन केस इफ यू आर द eyeliner fan, so just take an eyeshadow and create an illusion of an eyeliner. That is something I love doing. Now, no eye look is complete without a mascara. चाहे आप work पे हो नहीं हो, mascara is extremely important. This mascara by Swiss Beauty is one of my most favorite mascaras. This is called the Precision Mascara. ये देखो इसके bristles, it's so nice, it's so precise. And one thing that I love about this is ये आपके lashes को instantly long कर देता है और ऐसे लगता है कि बहुत thick हो गए, and it adds a lot of volume. I don't know आप लोग कैमरा में कितना देख सकते हो, but पहले let me do one eye so that you guys can see the kind of difference that this mascara makes. हमेशा जब मस्कारा लगाते हो अपनी आउटर लैशेस को ऐसे कर्ल करने की कोशिश करो, so that even if you don't have an eyelash curler, it's okay, but इसमें आपके lashes बहुत ही thick लगेंगे. Also, like you guys can see, यहाँ थोड़ा फैल गया, so just take a spoolie and इसको ऐसे कर लो and don't get scared. Never ever forget your lower lash line. Again, it's extremely important. And now, can you guys see the difference between this eye and this eye? A mascara just opens your eye up, like genuinely one of my must buy products. So now that I'm done with my eyes, so I'm going to go ahead and apply my blush. This is again from Swiss Beauty in the shade 03 Mood Lifter Coral. Whenever I go for work, I do not contour. मैं bronzer बिल्कुल नहीं use करती. Instead, I use a blush. Now, one thing you need to know about this blush is इसमें highlighter already है and it gives your face a very natural glow. So all you need to do is apply this on the high points of your cheek ताकि आपका face lifted रहे, and also on the apple of your cheeks. Now I'm going to go ahead and take my brush जिससे मैंने concealer blend किया था, and I am going to blend my blush. Actually, I do have a review of blushes on my page, and this was in the top 5. The beauty about blush is that it just makes you look fresh, and I love this one. Just see how beautifully it blends, and
I don't know अगर आप लोग को दिख रहा है, but just look at the glow of this blush and just look how beautiful my skin looks. बहुत नेचुरल लगता है, बहुत फ्रेश लगता है. फॉर वर्क आई थिंक इट्स परफेक्ट. नाउ आई लाइक टू डू वन मोर थिंग. आई लाइक टू गो विद द सेकंड शेड ऑफ ब्लश. ये दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी. इट्स इन द शेड 02 शो स्टॉपर. एंड मैं बस थोड़ा सा इस ब्लश को ना और कलर दूंगी by just applying this over here. I love this color, so I'm just gonna apply it on my cheeks and just sort of mix two shades. And I'm going to blend it. I just please tell me कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये ब्लश का शेड इतना स्टनिंग लग रहा है. Like I love it. You know, now since I'm done with everything कि मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया, मैंने ब्राउज कर लिया, वेरी लाइट लुक विद द आईज. आई डिड नॉट यूज अ ब्रॉन्जर, जस्ट अ ब्लश. सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द लुक विद जस्ट अ वेरी न्यूड शेड ऑफ लिपस्टिक. क्योंकि जब आप वर्क लुक कर रहे हो तो प्लीज अवॉइड गोइंग फॉर रेड एंड डार्क पिंक्स, rather go for nude so that there's just a flush of color on your lips and it looks very natural. जब भी आप अपनी लिपस्टिक डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो थोड़ी सी पैची हो सकती है. सो ऑलवेज टेक योर लिपस्टिक इन योर ब्रश एंड देन जस्ट ब्रश इट ऑफ ऑन योर लिप्स जस्ट लाइक दिस. इट्स सी दिस इज सच अ स्टनिंग शेड ऑफ न्यूड. ये मेरे लिप्स से इतना मैच करता है एंड इट इज सो स्टनिंग. व्हेन इट कम्स टू लिपस्टिक मैं ज्यादा लेयर्स नहीं लगाती क्योंकि आप चाहे जो भी मर्जी कर लो, लिपस्टिक you end up eating it. So especially when you're at work, you know, you sweat, you eat, you drink. So always keep your lipstick in your bag so that you can keep reapplying it. Just see, it looks so natural. Next step, which is very important, setting spray low and set all of your look. So you guys, this is the final look. I hope you guys enjoyed this tutorial. अगर आप काम पे हो, बहुत minimal look करना है, no makeup look for meetings, whether you're wearing Indian, you're wearing Western, ये look सब में काम आ सकता है. Thank you for staying till the end of the video. I love you guys and see you all super soon.